जय जगन्नाथ फ्रेंड्स समस्त को एग्जाम क्रैक बाय प्रदीप चैनल को स्वागत। तो आज आपण मान गोटे इंपोर्टाट अपडेट रही जोटा कि आपण मानकर एससी एसटी संरक्षण को लेकिन जो चली क्रिमिलेयर जोटा कि आपण मानकर रही से गुड़िक हटिला से बाबद आम डिस्कसन करवा कौन रही अपडेट टी आज अपडेट आपण मान को जनइबी तेणु भिडियोटी शेष पर्यटन निहाती भाव देखो जो मैंने चैनल को प्रथम थर पर नुआ आहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब कर रखु जहाँद्वारा कि सबुठ लाटेस्ट इनफर्मेशन आपण आम चैनल माध्यम पाइपर ता सहित वीडियो को लाइक करके निज फ्रेंड्स मान सहित बहु मात्रा शेयर करूँ जहाँद्वारा कि समस्त पाखे भिडियोटी पहुँच पार। तो कौन रही अपडेट टी चलतु जानवा देखु यहाँ आपण मानकर एबीपी न्यूज रे आसला एससी ने किया था क्रिमिलेयर का जिक्र। तो ये देखो तापर आ गोटे रही एससी एसटी सांसद को पीएम मोदी ने दिया भरोसा। तापर देखो ये आपण मानकर पीएम मोदी से मिला बीजेपी के एससी एसटी सांसद। तापर देखो एससी एसटी में क्रिमिलेयर लागू नहीं होगा। तो पीएम कहते कि एससी एसटी रे क्रिमिलेयर लागू हबो नहीं। तो चलतु कौन थिला आज आर्टिकल टी आम जानवा। न्यू दिल्ली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Friday meet with Bharatiya Janata Party BJP MPs from the Lok Sabha and Rajya Sabha who belong to scheduled caste and scheduled tribe community. The PM present a memorandum expressing their concern over the Supreme Court's recent observation on the implementation of the creamileyer concept within SC or ST reservation. They urged that this decision should not be enforced. According to the MPs, PM Modi assured them that he would address the issue. तो सुप्रीम कोर्ट जो देइतला जहाँ भी आमर राय जनाइतला कि क्रिमिलेयर लागू हबो बोली पीएम कहते कि कौन सी लागू हबो नहीं क्रिमिलेयर जोटा कि आमर एससी एसटी रिजर्वेशन ले। देखो तापर कि आफ्टर द मीटिंग बीजेपी पीएम Professor Dr. Sikandar Kumar said the Prime Minister had promised that the government would take a PM's concern into account. A few days ago, the Supreme Court gave its decision on SC or ST reservation. जोटा कि दिन पूर्व Supreme Court राय देइतिला। Delegation of around 100 PMs from both houses meet PM Modi today and share their concern. The PM listened to all the PMs, all the MPs and assured us that the government will act in favor of MPs, he said. BJP MP Fagan Singh Kulset added that the Prime Minister supported their stance. We told the PM that the SC decision on identifying the criminal within SC or ST are excluding them from reservation benefits should not be implemented. Reservation benefits should not be implemented. माने हबो नाही बोली कहउतले। तो पीएम आल्सो एग्रीड दैट दिस शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड जोटा कि आपण मानकर जो रिजर्वेशन टा जो सिस्टम थिला क्रिमिलेयर सिस्टम जोटा कि सुप्रीम कोर्ट आ देथिला सेटा लागू करा जीवो नाही नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। पीएम मध्य एग्री हेइचंती से कथा रे एवं यूनियन मिनिस्टर चिरांग पासवान also voiced his opposition to the Supreme Court's observation and announced that the Lok Janashakti Party Ram Vilas plans to file a review petition against the ruling. तापर देखंतु the Supreme Court on August 1 ruled that states have the authority to subclassify SC and ST and that the adequacy of representation should be assessed based on effective rather than quantitative representation. The 7-judge bench led by Chief Justice of India Dai Chandrachud delivered a 6:1 majority judgment allowing subclassifying within SC or ST reservation, overturning a earlier ruling in the E.V. Chennai's case, which had deemed such classification impermissible. तापर देखो जस्टिस BR Gavi suggested that states developed a policy to identify
and exclude the criminal from the SC or ST category to ensure that affirmative action benefits reach the most disadvantaged. However, Justice Bila M. Trivedi, in her dissenting opinion, disagreed with the majority ruling, starting the sub classification within SC or ST should not be allowed. तो এইগুড়িক ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିଲା ଅପଡେଟଟି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଛି ଦିନ ତଳେ 1 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ କି କ'ଣ ଆମର କ୍ରିମିନାଲିଟିକୁ ଆମର କ'ଣ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ SC ST କୋଟାରେ କୌଣସି SC ST କୋଟା ରହିବ ନାହିଁ, ରିଜର୍ଭେସନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲିଟିକୁ ହଟେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି PM ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ସେଠି ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।